Assalamu alaikum. Good evening to one and all. Welcome to my YouTube channel. So today in this video, I will be discussing on terminologies related to human anatomy. Okay. So before starting this video, let me remind about the previous class, what we have discussed. I hope you understood and I hope you remember. Okay, so what we have discussed at introduction to human anatomy and physiology, we have discussed at various branches of anatomy, we have discussed about the systemic things that is related to the mainly related to the physiology, and we have also discussed about the structural organization. Okay, so today in this video I will be discussing on terminologies related to human anatomy understanding. So before we move into the anatomical terminologies, we must know that what is the normal anatomical position of human being. So, because we have to read, we have to observe, we have to identify the different types of body structures. अंडरस्टैंडिंग यानी उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए, या उनके बारे में हम कोई रिसर्च करने के लिए, या उनके दौरान या उनको देखने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि what is the normal anatomical position. Okay, so that is what I am going to discuss first. So we can say normal anatomical position. It is also called as a standard anatomical position. Anatomical position. Okay. ठीक है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन या स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है और ये हम क्यों पढ़ते हैं? ये हम क्यों पढ़ते हैं ताकि हम अपने बॉडी की जो भी जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी स्ट्रक्चर्स है, उनके बारे में हम अच्छे से एसेस का ये स्टडी कर सके. ठीक है, वो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ नोइंग. एंड व्हाट इज इट एक्चुअली? सो व्हाट इज द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ आवर बॉडी? सो वी कैन से दैट the first point is body stands erect. Erect का मतलब होता है straight. Understanding? Second one is both the hands are hanging on either sides. Next one is feet are slightly apart. Okay. Fourth one is palms facing forwards. You can take the screenshot. Okay. Fifth one is thumb pointed away from body. Okay, so this is the basic, or we can say normal anatomical position of human being. Okay, so body stands erect. What is body stand erect? यानी we can say जो हमारी बॉडी है ना वो स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए. ठीक है, वो स्ट्रेट होनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट वन इज बोथ द हैंड्स आर लाइंग ऑन द आइदर साइड्स ऑफ बॉडी. यानी जो हमारे हैंड्स है, ठीक है ना, दे शुड बी लाइंग ऑन द आइदर साइड्स ऑफ बॉडी. ठीक है ना, हमें आराम से उनको हाथों को छोड़ना है, आराम से. ओके, दैट मींस हैंगिंग ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट वन इज फीट आर स्लाइटली अपार्ट. जो फीट्स होते हैं, जो पांव होते हैं, दे शुड बी स्लाइटली अपार्ट. मींस वो थोड़ा सा दूर होना चाहिए. ठीक है, थोड़ा सा दूर होना चाहिए ताकि उनका जो है ना, वो उनका जो पॉइंट या उनका जो पोजीशन है ना, वो जो है ना, वो हमारी बॉडी को मेंटेन कर सके. यानी क्योंकि जो फीट्स होते हैं ना, उन पर ही हमारी बॉडी का पूरा सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, वो उन पर ही डिपेंड होता है. अंडरस्टैंडिंग? यानी सॉरी, जो नॉट सेंटर ऑफ मास, वेट, जो बॉडी का पूरा वेट होता है ना, so that is taken by your legs or that is taken by your feet. So the feet should be slightly apart, understand, in order to maintain the anatomical position. ठीक है.
नेक्स्ट वन इज द palms facing forward, यानी जो palms होते हैं, what is palm? Palm is nothing but it is the anterior part or we can say front part of your hand. It should be facing forwards, ठीक है ना, यानी ये आगे की तरफ होना चाहिए, ठीक है. And next one is the thumb pointed away from your body. ये जो thumb होता है ना, ठीक है ना, mainly we can say that this thumb is not included in the digitus, ठीक है ना, अपर एक्सट्रीमिटी डिजिटस, यानी जो हैंड होता है एक्चुअली थंब जो होता है ना वो इनके साथ नहीं आता है, इसलिए हम बोलते हैं दिस थंब इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम दीज फिंगर्स और सेपरेटेड फ्रॉम दिस, वी शुड नॉट कीप लाइक दिस. इफ वी आर कीपिंग लाइक दिस then it may not be a proper anatomical position. Okay, so if we have to see the proper anatomical position, we have to separate this thumb from the digitus. Okay, understanding, because this is not the organ, or this is not the organ, we can say part of our digits or fingers. Okay, so this is the normal anatomical positions of our body. So body stand erect, both the hands are hanging on the either side, feet are slightly apart sorry, palms facing forward, thumb pointed away from the body. And one of the most important thing is that when the feet are slightly apart, जो पांव होते हैं जब थोड़ा सा वो दूर रहेंगे ना, जो टांगे होंगे, जो legs होंगे ना, they should be parallel. One leg should be parallel to another leg. Okay, understanding? I hope you understood about the anatomical position. Okay, now we are going to know about the 4 basic anatomical positions of the patients depending on their conditions, depending on their problems, ठीक है ना, associated with the body structures या functioning, understanding. So depending on the visualization, depending on the performance of the tests which we are going to do with them, so उसके हिसाब से mainly अगर हम बोलेंगे जो patients होते हैं ना उनको हम mainly 4 positions देते हैं, that is known as fundamental positions of the body या patients. Okay, so first one is supine position, second one is prone, third one is lateral, and fourth one is lithotomy. See, supine position, prone position, lateral position और lithotomy position, ठीक है ना, ये हम पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है ना, उनके प्रॉब्लम के हिसाब से. अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, या इट इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टेलिंग द पेशेंट टू टेक द रेस्ट, सो उसको कैसे सोना है, ठीक है ना, उसको किस पोजीशन में सोना है. अगर कोई पेशेंट ऐसा भी है, ठीक है ना, जिसको कोई तकलीफ हो, ठीक है, या जिसको हमने कोई सर्जरी किया है या कोई या उसको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से उसको सोना या आराम करना है, रेस्ट लेना है, ठीक है, उसी हिसाब से हम ये पोजीशंस को क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, सुपाइन पोजीशन का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पर्सन इज लाइंग ऑन हिज बैक, यानी वी कैन से फॉर द नॉर्मल टर्म वी कैन से स्लीपिंग, या वी कैन से लाइंग ऑन हिज बैक, लाइंग ऑन हिज बैक. When a person is lying on his back, ठीक है ना, ये कॉमन थिंग है कि when a person is lying on his back, his abdomen should be facing upwards and his face, the anterior of his face, it should be facing upwards. Okay, so we can say this is the supine position. Understanding? Next one is the prone position. ठीक है, prone position is when a person is lying on his abdomen. Okay, when a person is lying on his abdomen and this back part of his body is facing upwards, so that is known as prone position. And third one is the lateral position. What is lateral position? When a person is lying on either sides of body lateral on the either sides of body, यानी जो हमारी बॉडी के साइड होते हैं ना, चाहे वो लेफ्ट है चाहे वो राइट है, सो दिस इज नोन एज दिस इज माय mainly this is my left, ठीक है ना, so I can say left lateral, this is my right, I can say right lateral. So ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, पेशेंट का कोई कंडीशन होता है उसके हिसाब से. इट इज sometimes what we are going to do when we are going to perform some tests, so that time we need to make the patient to lie in that position so that we can easily detect the problem or we can easily do the assessment. Understanding? Physical assessment. And the last one is lithotomy. What is this lithotomy position?
लिथोटॉमी पोजीशन जो होता है ना, वो मेनली हम कब कब देते हैं, जब व्हेन अ मदर इज about to deliver her baby. When a baby is about to be delivered, so we will be shifting this mother to the labor room. हम जो मदर होती है उसको लेबर रूम में शिफ्ट करते हैं ताकि वहां पे बच्चा डिलीवर हो जाए, ठीक है, आसानी से, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू गिव द लिथोटॉमी पोजीशन. लिथोटॉमी पोजीशन जो होता है ना, एक्चुअली वो सुपाइन पोजीशन होता है, ठीक है ना. लिथोटॉमी पोजीशन इज ए सुपाइन पोजीशन in which legs are extended, sorry, not extended, legs are separated and flexed, and we can say fitted on strips, STRRIUPS. Okay, so what is this supine position? It is nothing but we can say it is also the supine position in which the woman's, okay, the pregnant lady will be there, her legs are to be lift up, ठीक है ना, has to be lift up, has to be separated, ठीक है ना, and flexed, separate होगा और फिर flex होगा, ठीक है ना. तो flex होने के बाद क्या हो जाएगा, they are fitted या positioned या we can say fitted with the strips so that the body cannot move, ठीक है. Okay, so now we have finished with the positions. Okay, so now let's see the anatomical terminologies under studying. So now we have to study about the some related terminologies. Okay, so anatomical terminologies. Okay, so first one is anterior, or it is also known as ventral. Second one is posterior, it is also known as dorsal. Third one is proximal, that is nearer. Fourth one is distal, that is farther. Fifth one is lateral. Next one is medial. Next one is superficial. Next one is deep. Ninth one is superior, and last one is inferior. Okay, so these are all the some basic terminologies about what we need to know. Okay, so what are the directional? These are also called as directional terms, ठीक है ना, by knowing this one we can get the directions of our body organs, कि कौन organ कहाँ पे locate होता है, उसका direction हम अच्छे से पढ़ सकेंगे, ठीक है. So first one is anterior. What is anterior? Anterior is also known as front, ठीक है ना. एंटीरियर को हम बोल सकते हैं फ्रंट या हम उसको बोल सकते हैं वेंट्रल. सो द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी इज नोन एज फ्रंट या इज नोन एज एंटीरियर. व्हाट इज पोस्टीरियर? पोस्टीरियर इज द अपोजिट ऑफ एंटीरियर, यानी जो एंटीरियर है आपके, अगर हम बात करेंगे हमारे एंटी बॉडी के बारे में, एंटीरियर बॉडी के बारे में, तो हम बोलेंगे कि chest cavity lies on the anterior of your body. Then we can say the cranial cavity or the spinal cavity lies on the back side, that is known as posterior or dorsal aspect, or we can say dorsal aspect or dorsal side. Okay, next one is the proximal, ठीक है ना. What is this proximal? Proximal is also known as near, ठीक है ना. Proximal is also known as the organ which is just slightly near to the this one head end of the body, ठीक है ना. तो देखो ये जो है ना, यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है, सो यहाँ पे जो हेड है, सो वी कैन से द ऑर्गन और द origin, the space which is near to the head end of the body, that is known as proximal. Understanding? So अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो हेड होता है,
वहां पे उसका प्रोक्सिमल क्या है, शोल्डर। हियर यहाँ पे शोल्डर होता है, प्रोक्सिमल हेड के नजदीक, जो हमारा ये हेड है, ठीक है, इसके नजदीक शोल्डर है, तो वी कैन से that shoulder is proximal to the head. Now if we have to talk about the distal का मतलब होता है दूर, understanding a line, an area which is further from that particular organ or that particular region, yeah, that particular organ. Now next one is distal is over, next one is lateral, and next one is medial. What is lateral? Lateral is nothing, the line which is drawn from medial to the side of the body. यानी अगर हम बात करेंगे जो ये वाला है, this one is medial, okay, the line which is drawn from medial to the side of body, that is known as lateral. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, okay. So the origin or the line which is drawn or which is directed towards the side of your body, whether it's left or it's right, it is known as lateral. Lateral में मैंने दो होता है, एक होता है left lateral, दूसरा होता है right. जो right side of body का जो साइड होगा उसको हम बोलेंगे राइट लेटरल, और जो लेफ्ट होगा उसको हम बोलेंगे लेफ्ट लेटरल. नेक्स्ट वन इज द मीडियल. मीडियल क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मीडियल वो लाइन, द लाइन विच इज डायरेक्टेड, ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड्स, द लाइन विच इज डायरेक्टेड स्ट्रेट फॉरवर्ड्स फ्रॉम हेड टू द टो, या फ्रॉम हेड टू द टो, ओके, वेयर इट divides the body into two equal halves or two equal parts, that is known as medial. Okay, the next one is the superficial, next one is deep. What is superficial? Superficial means on the surface, ठीक है ना, the organ, the whatever we are going to whatever we are going to talk about, we can say the origin, the organ, whatever we can say. So what is the superficial? The surface, ठीक है ना, the surface of the, we can say the external surface of that particular organ, of that particular body is known as superficial. For example, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा. फॉर एग्जांपल जो हमारा ये स्किन होता है, ठीक है, स्किन का जो सुपरफिशियल लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस. अंडरस्टैंडिंग? सो वी कैन से दैट एपिडर्मिस इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, राइट? अंडरस्टैंडिंग? सो जब हम सुपरफिशियल ऑर्गन्स के बारे में, उनका जो सरफेस, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल. और डीप क्या होता है? डीप मीन्स when we are going to look into the deep, yeah, when we are going to look into the inside of our body या internal organs of our body, ठीक है ना. उसमें क्या होता है, अगर ये मैंने बोला कि जो हमारा स्किन होता है उसका जो सुपरफिशियल लेयर होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना. तो जो सुपरफिशियल लेयर होता है ना स्किन का, उसको हम बोलते हैं, सो दैट इज द एपिडर्मिस. अंडरस्टैंडिंग? जो एपिडर्मिस होती है, तो यानी जो डर्मिस के ऊपर होती है, ठीक है. तो अगर हम उसके अंदर की बात करेंगे, यानी डर्मिस की बात करेंगे, सबक्यूटेनियस की बात करेंगे, मसल्स की बात करेंगे, बोन्स की बात करेंगे, या किसी और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, सो वी हैव टू गो डीपली. अंडरस्टैंड? सो दैट इज नोन एज डीप ओनली, ठीक है ना. द डीप इज नथिंग बट डीप इज जस्ट अपोजिट टू द सुपरफिशियल, यानी सुपरफिशियल के बाद डीप आता है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज सुपीरियर and inferior. What is superior and what is inferior? Superior and inferior is nothing but, we can say, the line which is directed, ठीक है ना, the line which is directed straight to the, yeah, we can say the line which is directed towards the head end of the body. The वो line, ठीक है ना, जो हम ड्रा करते हैं, या जो हम ड्रा करते हैं, जो head end of the body होता है, यानी जो हमारा head होता है, like this we can say. So this, we can say, this area, the line which goes or which moves along straight forwards, or which moves along the head end of your body, that is known as a superior. What या superior हम बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना ऊपर का पार्ट, ठीक है ना. या आप लोगों ने सुना होगा हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में, अगर आप लोगों ने सुना होगा, we will say no that there are mainly inferior vena cava and superior vena cava. So superior vena cava मतलब the vein which lies, या which lies just above the heart, जो हार्ट के ऊपर होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कवा. और जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर. क्यों? क्योंकि वो जो होती है ना, that will be lying or that will be directed foot end of the body. Our body, we can say anything. Body doesn't mean only our body, no, but body we can say any organ, any structure, ठीक है ना, उसका जो फुट एंड होगा, वहां पे जो भी लाइन होगा, या वहां पे जो भी ऑर्गन होगा, उसके ऊपर जो भी ऑर्गन होगा उसको हम बोलेंगे सुपीरियर, और नीचे में जो भी ऑर्गन होगा या जो भी सरफेस जिसके बारे में बात करें उसको हम बोलेंगे लोअर और इंफीरियर. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, ठीक है ना. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज बॉडी प्लान्स. There are mainly three types of body plans, okay, which we have to discuss about. So next one is the body plans.
फर्स्ट वन इज sagittal or longitudinal. Second one is the coronal or frontal. ठीक है. And third one is transverse. Third one is transverse plan. ठीक है. सी यहां पे आप लोग देख सकते हो व्हाट इज सजेटल प्लान और लॉन्गिट्यूडनल प्लान. सजेटल प्लान इज एनीथिंग द एनी लाइन व्हिच डिवाइड्स आवर बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट्स, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट. यानी अगर हम बोलेंगे कि द लाइन व्हिच इज ड्रॉन स्ट्रेट, ठीक है, टू द मिडल ऑफ योर बॉडी फ्रॉम योर हेड एंड टू द फुट एंड, सो दैट विल, ठीक है ना. कॉमन बात है कि वहां पे तो दो पार्ट्स हो जाएगा हमारी बॉडी का, ठीक है ना, डिवाइड हो जाएगा. सो वी कैन से व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन, ठीक है ना, टू द मिडल ऑफ योर बॉडी व्हिच डिवाइड्स योर बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज नोन एज midline, or sorry, that is known as sagittal plan, or we can say longitudinal plan. Now next one is the coronal or frontal plan. What is coronal or frontal? ठीक है ना. कोरोनल का मतलब, कोरोनल फ्रंटल प्लान का मतलब होता है सो द लाइन विच इज ड्रॉन, ठीक है, जो लाइन होता है जो हम ड्रॉ करते हैं अपनी बॉडी पर, विच डिवाइड्स योर बॉडी इनटू टू मेनली पार्ट्स, दैट इज वी कैन से एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट. ठीक है ना. वो लाइन जो आपकी बॉडी, चाहे वो अपर बॉडी हो चाहे वो लोअर बॉडी हो, जब वो ड्रा करते तो वो क्या करता है, वो आपके बॉडी को दो पार्ट्स में तकसीम करता है. दैट इज फर्स्ट वन इज एंटीरियर एंड नेक्स्ट वन इज पोस्टीरियर. यानी जो लाइन हम, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई लाइन ड्रा करते इधर से, ठीक है ना, सो लाइक फ्रॉम दिस साइड लाइन, सो वी कैन से नो दैट फ्रंट या anterior या front part of our body and posterior या back part of our body. So we can say this coronal plane is nothing but coronal plane is something when it divides your body into anterior part and पोस्टीरियर पार्ट. हम ये प्लेन्स क्यों पढ़ते हैं? देखिए प्लेन्स हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम बॉडी ना, हम आराम से हम डाइसेक्शन कर सके, ठीक है ना. जो कट होता है ना, कटिंग, जिस जैसे हम एनाटॉमी का मतलब ये होता है वही कि हम डाइसेक्शनल एनाटॉमी पढ़े, ठीक है ना, हम बॉडी के को मतलब पार्ट्स पे पढ़े, अंडरस्टैंडिंग. सो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना, जैसे एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, क्या बोलते हैं उसको, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, मीडियल, डी, सुपरफिशियल, सो उसी को हम बोलते हैं मेनली कोरोनल और फ्रंटल प्लान. नाउ नेक्स्ट वन इज अ ट्रांसवर्स प्लान. व्हाट इज ट्रांसवर्स प्लान? जो ट्रांसवर्स प्लान होता है ना, इट इज अ प्लान व्हिच डिवाइड्स योर बॉडी इनटू अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी. यानी ये वाला लाइक दिस, सी this one is, we can say up to now we can say from here, if we will draw the line or plan, so this plan is dividing your body, ठीक है ना, ये आपकी बॉडी को डिवाइड करता है into two equal parts, ठीक है ना. we can say upper extremity and lower extremities. so यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. जो sagittal plan होता है, it is a plan, ठीक है ना, which is drawn longitudinally to your body, which divides your body into two equal parts, that is left part and right part, understanding. And next one is the coronal or frontal. It is the plan which is drawn to your body, which divides your body into two, that is anterior and posterior aspect. Okay, yeah, we can say ventral or dorsal part of your body. Okay, whether it is upper extremity or it is lower extremities. Sorry, whether it is upper part of your body or lower part of your body. ठीक है ना? So like this will be the front or anterior, and this will be the posterior or dorsal part of your body. ठीक है. And next one, the last one is transverse. Transverse plan is nothing but it is the line which is drawn horizontal, ठीक है ना, जो हम horizontally करते हैं. The line which is drawn horizontally through your body, which divides your body into upper extremity and upper part and lower part. जो आपके बॉडी को डिवाइड करता है अपर एक्सट्रीमिटीज में या लोअर एक्सट्रीमिटीज में. अगर हम बोलेंगे अपर पार्ट में, तो अपर एक्सट्रीमिटीज आएगा. एक्सट्रीमिटीज मतलब टू आर्म्स या टू लिम्ब्स, एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब टू लेग्स या टू
lower limbs. Okay, so this was all about the body plans. Okay, so I hope कि आप लोगों को समझ आया होगा. Okay, now I'm going to conclude this video. Okay, so what we have seen today in this class, in this video, so we have seen anatomical terminologies. ठीक है ना? Before anatomical terminologies, we have seen the anatomical positions. What is the normal anatomical position? You must remember about the anatomical position of the human being. ठीक है ना? Or it is also called as standard anatomical position. What are all the 4 different types of body positions? ठीक है ना? Based on the diagnosis, based on the assessment tools, based on the performing the tests, or based on the need of those organs. We are classifying the positions into 4 types, that is prone position, supine position, lateral position, and last one was lithotomy position. We are giving these positions to the patients in order to go for any treatment, that is whether it is medical treatment or any surgical treatment, or we can say when they are going for the diagnosis, or medical diagnosis, understanding in order to rule out reveal the causes of disease, yeah, we can see symptoms and all that thing. ठीक है ना? So that will be very much necessary tool. Okay, so that should be applied in the field of nursing. And the next one we have seen body plans. In body plans we have discussed about this one: sagittal plan, longitudinal plan, coronal plan or frontal plan, and the last one was the transverse plan. Okay, so this was all about today's class. So मिलते हैं अगले किसी वीडियो में. ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम.